थी। ऑडियो कट रहा है, पास में रहना। फोन पे काट। Now, right in front of you, Wing Commander Ankur Yadav and Sergeant Vishal are flying past in their paramotors, showcasing their exciting maneuvers. A paramotor is an ultra-light flying machine which can fly at a very low level with slow speed, and it can be utilized effectively for search and rescue operations. Please give a huge round of applause to these air devils. आपके ठीक सामने रखा लड़ाकू विमान तेजस है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह एक सिंगल सीटर, सिंगल इंजन, चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसका वायुगतिकीय रूप से अस्थिर डिजाइन, जिसे हम एरोडायनामिकली अनस्टेबल डिजाइन कहते हैं, इसे अति चालनीय और एक घातक लड़ाकू विमान बनाती है। यह पूरी तरह से फ्लाई बाय वायर सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स के साथ साथ एक पूर्ण ग्लास कॉकपिट सुविधा भी है। 1 जुलाई 2016 इस महत्वपूर्ण दिन को तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तब से तेजस ने विभिन्न अभ्यासों एवं कई हवाई प्रदर्शनों में अपनी दक्षता साबित की है। 2018 से भारतीय वायुसेना के अभ्यास जैसे गगन शक्ति 2018 एवं वायु शक्ति 2019 एवं 2022 आदि में तेजस ने लगातार भाग लिया है। ऑपरेशन बंदर के दौरान भी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से तेजस को तैनात किया गया था। Next on display is the Akash surface-to-air missile system with an intercept range in excess of 25 kilometers. It has been produced by Defense Research and Development Organization. This system is capable of simultaneously tracking 64 targets and engaging multiple targets at a given time. They are also capable of being deployed at high altitudes. The Advanced Light Helicopter, Dhruv, next to the Akash system, is a twin-engine multi-purpose helicopter. It is capable of armament delivery, logistics support, troop transportation, aid in disaster relief, search and rescue, and medical evacuation. Ladies and gentlemen, we are honored today with the esteemed presence of many former chiefs of air staff amongst us. Their legacy, leadership, and professional acumen is what drives us today on our paths to greater glory. On behalf of Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, we welcome Air Chief Marshal N.C. Suri, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Chief Marshal A.Y. Tipnis, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Chief Marshal S. Krishna Swamy, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal and Bar, Air Chief Marshal S. P. Tyagi, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Chief Marshal F. H. Major, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Shaurya Chakra, Vayu Sena Medal, Air Chief Marshal N. A. K. Brown, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, and Air Chief Marshal R. K. S. Bhadoria, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal. भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर वर्ष 1932 को हुई थी। हर वर्ष आज ही के दिन हम भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस को गर्व से मनाते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से भारतीय वायुसेना का उद्देश्य वाक्य नभा स्पर्शम दीप्तम लिया गया है, जिसका स्रोत है नभा स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वाम प्रविथिनांतरात्मा धृतिम विंदामी शमम च विश्वों। अर्थात हे विश्वों, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा विस्तारित मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूं। Let us now acquaint you with the composition of this morning's ceremonial parade. The Air Force Band on parade is led by Warrant Officer Deepak Verma. The band will march in and enthrall you with a rendition of martial tunes. अब हम आपका परिचय आज की समारोही परेड से करवाते हैं। आज के इस परेड को लय एवं धुन दे रहा है नंबर 3 एवं नंबर 6 वायुसेना बैंड, जो कि एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद तथा एयरफोर्स स्टेशन पालम के अंतर्गत स्थित है। वायुसेना बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर दीपक वर्मा। The Indian Air Force Band performs musical duties for military functions, usually for the armed forces. The military band consists mostly of wind and percussion instruments. The conductor of the band bears the title of Band Master. The military band is capable of playing ceremonial and martial tunes, including the national anthem and patriotic songs, both while being stationary and while marching. परेड बैंड के अलावा अन्य सैन्य कलाकारों की टुकड़ी में शामिल है सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, जैज बैंड और गायक समूह। The band in attendance today will be playing martial tunes like Astronaut, Space Flight, Rafale Flyers, and the ever soul-stirring tune of Sare Jahan Se Achhe. बिगुल की धुन पर परेड आपके दाहिनी एवं बाईं ओर से मार्च करते हुए आएगी। वीडियो सज्जनों, जब भी निशान टोली परेड ग्राउंड में आए, परंपरा को कायम रखते हुए आप सभी इसके सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दी भारी जन सैल्यूट करें। जो है उसके पहला यानी कि फाइटर है, इसमें बना हुआ फाइटर है, और उसके बाद जो आकाश सिस्टम है, उसके बाद जो है भारत फोर है। मतलब पूरी देश की ताकत और देश की ताकत आपको दिखाई जा रही है। और इसके बाद पहली बार Due to the martial tradition at the sounding of the bugle, air warriors will march in from both sides of the parade ground. The marching contingent will comprise 4 squadrons with 2 flights each. As is the custom, the Air Force colors will be displayed during the parade. When the Air Force colors are marched into the parade ground, and when the colors are paraded in front of you, please rise in its honor and all uniformed personnel shall salute. रफाल हिस्सा लेगा। पहली बार जो सिंगल इंजन पे एयरक्राफ्ट जो है MiG-21 में फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। The Indian Air Force over the years has rendered yeoman service in times of disasters. All available resources of the Indian Air Force have always responded to enormous challenges with speed, resolve and fortitude. In the past 1 year,
flood relief and rescue operations have been undertaken in Uttarakhand, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir. The Deoghar Ropeway rescue in Jharkhand was another feather in the Indian Air Force's cap. The Indian Air Force also joined the firefighting operations in Rajasthan and Himachal Pradesh. Every day, the Indian Air Force undertakes numerous casualty evacuation missions in all types of terrain, in various medical emergencies, stranding of tourists, and security situations. In a few moments from now, the sounding of bugles will herald the parade. उत्साह और समन्वय से भरपूर परेड वायुसेना बैंड की धुन पर मार्च करती हुई अब आपके सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस के प्रतीक हैं जो आसमान को भी झुकाने में सक्षम हैं। वायुसेना के आह्वान नभास प्रशम दीप्तम को सही मायनों में चरितार्थ कर रहे हैं और मानो कह रहे हों, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। The parade is now marching in from your right and left, keeping in step to the tune of northern borders. The marching contingents, arms swinging, heels digging, heads held high, proud of their blue Air Force uniform, heritage and the motto, touch the sky with glory. The parade on display today has been trained by Squadron Leader Atal Singh Sekhon and his team. The marching contingent is about to display a scintillating performance of precise and smart drill. Whether in the air or on ground, the air warriors approach every task with confidence and dedication. They are radiating with pride as they put their best forward. The parade adjutant, Flight Lieutenant Abhigyan Singh, will now hand over the parade to the parade commander. Today's parade commander is Group Captain Anup Singh, Vayu Sena Madhya.
Group Captain Anup Singh was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in December 2001. A graduate of the National Defence Academy, he is a qualified flying instructor and has flown 2,800 hours on Jaguar and Hawk aircraft. He has commanded the Sudikiran Aerobatic Team and is presently posted at a base in Training Command. हेलो हेलो चेक निशान करेक्ट निशान करेक्ट बॉक्स करेक्ट लंबा शॉट The Nishan Toli will now be marched in by Flight Lieutenant Siddharth Shoran. These rides in honor of the President's colors. All uniformed personnel shall salute. जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप इसके सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दी भाई बल आपकी निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ शोरा। President's colors, a mark of honor represented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on the 1st of April 1954 in recognition of his service to the nation. President's colors, therefore, are the highest honor for the service and are displayed with the highest regard and pride on special occasions like this. The presentation of the colors to the Indian Air Force on 1st April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. Resident Air Force Vice Welfare Association Regional, Mrs. Rekha Prabhakaran has arrived. She has been received by President of the local, Mrs. Panchali Lal. क्या खास है इस बार जो वायुसेना दिवस पर बात करते हैं वायुसेना के प्रवक्ता कमांडर क्या कुछ इस बार वायुसेना दिवस पर आप हेलो कैमरे का लेंस पर कुछ डार्क है कैमरे पे बहुत स्पॉट है लेंस पे Ladies and gentlemen, Air Officer Commander-in-Chief, Western Air Command is about to arrive.
Air Marshal Shri Kumar Prabhakaran, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command, has arrived. He has been received by Air Commodore Mansij Lal, Air Officer Commanding Air Force Station, Chandigarh. औपचारिक तौर पर ये परेड की शुरुआत हो गई है। निशान टोली जो है वो इस समय डायस से होते हुए ठीक सामने इस समय जो एयरमैन हैं, साथ में एयर वॉरियर्स हैं, उनके साथ है। और अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर जब एयरफोर्स चीफ यहाँ पर आएंगे तो सभी को संबोधित करेंगे। ये 90 साल हो चुके हैं एयरफोर्स डे का, 90th एयरफोर्स डे है और इसी उपलक्ष्य में इस बार ट्रांसफॉर्मेशन यानी फॉरवर्ड से लेकर जो रफाल तक है उसमें दर्शाया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस जो पहली बार इसका हिस्सा बन रहा है, प्रचंड स्क्वाड्रन का ये प्रचंड प्रहार करने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इसको महारत हासिल है और दो HAL ने अपने इसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। As the parade is held within his command, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command, has been presented with a general salute on arrival. We now await the arrival of Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, the chief guest who will review this parade. The Indian Air Force has been actively supporting and implementing the national vision of Atmanirbhar Bharat or self-reliant India. We have been at the forefront of indigenization with the induction of light combat aircraft Tejas, Arudra and Ashlesha radars, Astra air-to-air missiles, Akash surface-to-air missile system, advanced light helicopters, integrated air command and control system, and integrated material management online system. As a part of achieving self-reliance, the Indian Air Force has successfully undertaken various life extension programs, upgrades, and reclamation and repair schemes for the existing legacy platforms and systems by tapping the potential of various Indian agencies. It is a constant endeavor of the Indian Air Force to modernize and enhance its capability to effectively address any emerging threats. वर्ष 1965 के युद्ध में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो सैनिकों के बलिदान के बाद निराश्रित हो चुके उनके परिवारों के लिए उचित सहायता प्रदान कर सकती थी। इसी मूल समस्या के कारण भारतीय वायुसेना के सेवारत, सेवानिवृत्त एवं विकलांग कार्मिकों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 28 अक्टूबर 1970 को वायुसेना संघ कल्याण संस्थान का उदय हुआ। President Air Force Vice Welfare Association, Mrs. Neeta Chaudhary, has arrived. She has been received by President Afar Regional, Mrs. Rekha Prabhakaran. AFA strives to channelize the tremendous potential of Sangamis and provide them with the wings of entrepreneurship and self-sufficiency. AFA has always stood in solidarity with the families of air warriors and all those supporting the Indian Air Force. One of the many endeavors of AFA are the Umeed Asha Kiran schools, which aim to provide a stable learning environment to specially able children of Indian Air Force personnel. अपनी स्थापना के समय से ही अफवाह ने वायुयोद्धाओं के परिवारों की सदैव सहायता की है।
इस संस्थान ने अपनी स्थापना के 51 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कोविड महामारी के दौरान हर वायु योद्धा के परिवार तक आवश्यक खाद्य एवं अन्य वस्तुएं पहुंचाकर इस संस्थान ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। Ladies and gentlemen, the Chief of the Air Staff is about to arrive. Air Chief Marshal B.R. Chaudhary, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, ADC, Chief of the Air Staff has arrived. He was received by Air Marshal Shri Kumar Prabhakaran, Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command. Now you can see the ensign formation lying in, comprising 3 Mi-17 V5 helicopters of 152 helicopter unit, trooping the Indian Air Force ensign. The formation is being led by Wing Commander Vishal Jain. Chief of the Air Staff, accompanied by the parade commander, is now proceeding to inspect the parade. On the solemn occasion of Air Force Day, Chief of the Air Staff has issued a message for all the personnel of Indian Air Force called Special Order of the Day, and it conveys a message of generational transformation with Atmanirbharta as its cornerstone and a seamless assimilation of modern technologies with emphasis on training methods. Okay, sir. Parade Adjutant, Flight Lieutenant Abhigyan Singh. Number 1 Squadron commanded by Squadron Leader Arjun Malhotra. Number 2 Squadron commanded by Squadron Leader Nikesh Dhami. The Nishan Toli led by Flight Lieutenant Chirag Shoran. Number 3 Squadron commanded by Squadron Leader Vipin Kumar. Number 4 Squadron commanded by Squadron Leader Ashish Ambar.
On the occasion of the 90th anniversary of Indian Air Force, I extend my warm greetings to all Air Warriors, NCs, DSE personnel and their families. Over the last 9 decades, the Indian Air Force has come a long way in transforming into one of the finest air forces in the world. We are witnessing an increasingly volatile, uncertain and complex geopolitical environment where it is becoming increasingly essential to have a credible and robust armed forces to sustain development of the nation. Launch of Agnipath scheme gives the opportunity to harness the potential of India's youth and channelize it towards the service of the nation. We need to create an innovative training template that ensures effective utilization of the Agniveers. My wife Neeta and I convey our greetings to all Air Warriors, NCs, personnel, civilians and their families. We wish you continued success in all your future endeavors. Unquote. The parade commander has taken permission to march past the saluting days. इंडियन सिस्टम की बात करें तो मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आपके सामने अगर देख पाए और साफ तौर पर वहाँ बकायदा लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना और एक एयरक्राफ्ट की बात करें तो सामने अगर लेफ्ट की और आपकी नजर जाए तो तेजस सबसे पहले आपको तेजस है, फिर उसके बाद आपको प्रचंड दिखेगा, फिर धोनी दिखेगा, फिर आपको लाइट कम्बट फाइटर दिखेगा, आकाश मिसाइल सिस्टम है और उसके बाद जो ध्रुव मार्क 4 है, यानी जो 4 जो बेस से बने हुए जो भारतीय वायुसेना का वेपन सिस्टम है वो यहाँ डिस्प्ले किया गया है। और जो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो कितना लेक है और 2:40 के आसपास जो वहाँ फ्लाई पास होगा। परेड अब आपके सामने से रफाल फ्लायर्स की जोशीली धुन पर मार्च करते हुए गुजरेगी। यह धुन ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर दिनेश शर्मा द्वारा निर्मित की गई है। किया जाएगा, चीफ एड्रेस करेंगे और दूसरी जगह पर वहाँ पर जो फ्लाई पास्ट होगा। और ये देश के इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है कि फ्लाई पास्ट के कार्यक्रम में जो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। यह भी देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जी When the President's colors march past in front of you, we request all of you to rise in its honor. Uniformed personnel shall salute. रेडियो एवं सदरी, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्ण हरिजन सल्यूट करें। As the parade commander marches past the dais, flying in from left is Rudra formation, comprising of 3 indigenously designed and developed armed advanced light helicopter Mark 4, flying in big formation, presenting an aerial salute. Formation is being led by Group Captain Chetri Mayur Shamananda Singh, Commanding Officer 116 Helicopter Unit, flanked by Wing Commander Rupendra Kumar Mishra on right and Wing Commander Vishnu Prasad on left.
आज की यह परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाते यह कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हर संकट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह हमारे वायु योद्धाओं का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए मानो कह रहा हो कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। मध्य सात दस चल। जनरल सलोट रमत चल। आपके अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान। The Chief of the Air Staff will now address the parade. Former Chiefs, Air Marshal Prabhakaran, AOC&C Western Air Command, senior officers from the three services and the Ministry of Defence, esteemed veterans, air warriors on parade, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, on the 90th anniversary of the Indian Air Force, I extend my best wishes and welcome you all to this event. In a break from tradition, we have decided to conduct the Air Force Day Parade at Chandigarh this year and in different locations across the country from here onwards.
I would like to compliment the AOC Western Air Command, AOC Advanced Headquarters, the AOCs of 12 Wing and 3 BRD, and the team for putting up such a befitting show in such a short time. My compliments also to the parade commander and all air warriors on parade for your immaculate turnout, precise drill movements, astute military bearing and josh. Good show and well done. We have inherited a proud legacy curated by the sheer hard work, perseverance and vision of our predecessors. It will only be right to acknowledge the contributions of our veterans who have charted this course, and now the onus is on us to usher the Air Force into the centenary decade. My salute to the former chiefs for steering the Air Force in the right direction, and my assurance to them that I, ably supported by all Air Warriors, will lead the Air Force to scale even greater heights. On behalf of all Air Warriors, I would like to pay homage to our fallen braves who made the supreme sacrifice in the line of duty. Today is an occasion to renew our allegiance to the Constitution of India, and as preservers of integrity and sovereignty of our country, we owe it to our future generations. On this historic occasion, it is my privilege to announce that the government has approved the creation of a weapon system branch for the officers in the Indian Air Force. This is the first time since independence that a new operational branch is being created. This will essentially be for manning of 4 specialized streams of surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, remotely piloted aircraft, and weapon systems operators in twin and multi-crew aircraft. Creation of this branch would result in savings of over 3,400 crores due to the reduced expenditure on flying training. Induction of air warriors into the Indian Air Force through the Agnipath scheme is a challenge for all of us. But more importantly, it is an opportunity for us to harness the potential of India's youth and channelize it towards the service of the nation. We have changed our operational training methodology to ensure that each Agniveer is equipped with the right skills and knowledge to start their career in the Air Force. In December this year, we would be inducting 3,000 Agniveer Vayu for their initial training. This number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing. We are also planning on induction of women Agniveers starting next year. Creation of infrastructure is in progress and streamlining of trade structures is being finalized. In the last 1 year, we have had our share of challenges, and the Air Force has taken these challenges head on and with all guns blazing. Continued deployment along our borders, HADR operations, or rescuing stranded Indians from conflict zones. We have seen the entire spectrum of roles and tasks laid down for the Air Force being undertaken. We are well and truly prepared to take on everything that comes our way, and the credit for that goes to all of you. The traditional domains of land, sea and air have expanded to include space and cyber. We are increasingly seeing the conversion of all these domains into one continuum in the form of hybrid warfare. The use of non-kinetic and non-lethal warfare to supplement kinetic means has changed the way wars will be prosecuted. Therefore, conventional systems and weapons will need to be augmented by modern, flexible and adaptive technology. Technology has given us the wherewithal to be innovative. We need to accept the fact that tomorrow's conflicts cannot be fought with yesterday's mindset. To be able to execute all missions in an environment of denial will increasingly be the basis of our training in the Air Force. Keeping this in mind, there is a need to plan for integrated and joint application of combat power. The key to success in multi-domain operations is to have flexible, robust, redundant command and control structures, which will allow a joint force to dominate across the domains. No single service can win a war on its own. Work is in progress to enhance jointness amongst the 3 services. The theme for this year's anniversary celebrations, Indian Air Force, Transforming for the Future, is very apt and highlights the Indian Air Force's need to redefine, reimagine and recalibrate
to transform into a contemporary and future-ready force. Our fighting potential has to be sustained over the years through the induction of new generation fighters, AWACS, AEWC and flight refueling aircraft. We have initiated necessary steps to ensure our fighter squadron strength remains at the desired level. Indigenous development of 6 AEWC Mark II has been sanctioned, and we are actively pursuing the acquisition of I-STAR, UAVs, counter-UAS technology, and also strengthening our networks. Modern armed forces have to be sufficiently self-reliant to ensure minimum disruptions. Towards this, Atmanirbharta and Make in India is a step in the right direction. Our indigenous operational network, AFNET, the backbone of all air operations, the IACCS, one of the largest maintenance management protocols, the EMMS, and the fact that we are completely paperless in our offices through the e-office application is a testimony to our commitment towards becoming self-reliant. The light combat aircraft, advanced light helicopter, Akash, Astra, and BrahMos are a few examples of the indigenous hardware that has already been inducted and operationalized. We have also signed a contract for 83 LCA Mark 1A and are fully committed to the development of the LCA Mark II and the AMCA. The advent of drones, swarm drones, hypersonic weapons, and space-based ISR systems have added new dimensions to warfighting. To effectively handle the full spectrum, artificial intelligence is being used for quicker decision-making and analysis of big data. I am happy to report that several projects are well underway to utilize the potential of automation, data analytics, and artificial intelligence to transform our operational philosophy. The growth and success of any organization revolves around its personnel. Irrespective of the years of experience or position, each one of us is a vital link in the organization. We need to recognize our importance in the chain and understand that what we do every day at the workplace matters. A smart and efficient day's work will instill pride in our job. Our aim should be to match or surpass modern industry standards in operations, maintenance, and administration. As an organization, we need to incorporate the principles of continuous process improvement at our workplace. This can only be achieved through critical problem identification, understanding the root causes, and providing workable solutions to eliminate waste. We must focus on multi-skilling and multitasking to create a smart working environment and enhance efficiency. This is only possible if we build on our experience and develop innovative thinking. There is a tremendous scope for change, and change we must to evolve and be relevant. The challenge I pose to you all today is to transform into forward-thinking and forward-looking air warriors who can support our process of adapting to a constantly changing environment. I call upon every air warrior to be a part of the solution by your creativity, innovative thinking, and a drive to lead the change. I promise you good leadership, a good working environment, and the best equipment that we can muster. I want you to have faith and confidence in your abilities and a resolve to do the impossible. I want you to display exceptional courage and fortitude, to have compassion for your subordinates, and most importantly, be good professionals. As we celebrate 90 years of professional excellence, it is incumbent on us to preserve our past and accurately record the present so that the future generations of the Air Force benefit from it. The culture and traditions of the Air Force have led us to excel in our profession. But remember that while we have to preserve those elements of our culture that strengthen the Air Force, we must be prepared to shed those that are barriers to efficiency and mission accomplishment. I congratulate all of you for the successes of the Indian Air Force, which would not have been possible without your collective, sincere and dedicated efforts as a team. As we start a new chapter in the history of the Indian Air Force, our aim should be to sustain our capabilities as a fearless and potent force and maintain a cohesive, happy family. I have no doubt that your commitment and your collective capacity to achieve excellence will take the Indian Air Force to even greater heights in the years ahead.
On behalf of my wife Nita, I would like to congratulate everyone on the 90th anniversary of the Indian Air Force, and may the Indian Air Force always touch the sky with glory. Thank you and Jai Hind. All are requested to rise for the national anthem. अब राष्ट्रगान होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं राष्ट्रगान गाएं। राष्ट्रगान शुरू कर। निशान और परेड को ले जाने की आज्ञा दें श्रीमान। The parade commander has taken permission to march off the Nishan Toli and the parade. निशान चले, निशान को ले जाओ, परेड सलामत चल। निशान चले, मध्य से rise in honor of the President's colors as they are marched off to the tune of space flight. Uniformed personnel shall salute. जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारीगण सल्यूट करें।
आज आसमान की ओर देखकर हमारे सभी वायु योद्धा दुश्मन को संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र पर आए किसी भी खतरे से निपटने के लिए वे न केवल हमेशा तैयार हैं, बल्कि हर हमले को नाकाम करने में भी सक्षम हैं। शरीर पर धारण यह वर्दी और उस पर चमकते कई मेडल इस बात को कह रहे हैं, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। और जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। इस भव्य परेड के बाद आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अब हम आपके समक्ष भारतीय वायुसेना के नव प्रशिक्षित वायु योद्धाओं की तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करते हुए एक जिप्सी ड्रिल दिखाएंगे, जिसमें एक चलते फिरते वाहन को अल्प समय के अंदर खोलकर पुनः चलने योग्य बना दिया जाएगा। प्रदर्शन करती है, वहीं दूसरी ओर नए वायु योद्धाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। तो आइए देखते हैं इस हैरत अंगेज प्रस्तुति को। आकाश मिसाइल है और उसके बाद ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये वो तस्वीरें हैं। In the next few minutes, you will witness a unique spectacle. The team in front of you will simulate the actions of special forces in difficult terrain. वो अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं और इन कर्तव्यों के पीछे की झांकी मैंने आपको दिखाई। स्वदेशी विमान, स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो भारत में बने हैं और भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और इनके ऊपर कहीं ना कहीं अब भारतीय वायुसेना के अलावा पूरे देश को गर्व ये होता है कि देश में फाइटर जेट यहाँ पर मौजूद है और ये तस्वीरें आप देखिए। Now the team leader, AC Navdeep Singh, will be taking permission from Chief of the Air Staff to commence the drill. एयर शो है वो चंडीगढ़ की सुखना झील पर होगा और उसमें कोई जगुआर MI और प्रचंड तमाम तेजस, तमाम हेलीकॉप्टर से लेकर चिनूक जो परिवहन की यांत्रिक संक्रिया आरंभ करने की आज्ञा दीजिए। तमाम प्रदर्शन और ये जो तस्वीरें हैं ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन की हैं और इससे अगला जो कार्यक्रम है There is no mountain high enough, no canyon deep enough, not a river wide enough to keep an air warrior from accomplishing the task ahead of him. When faced with an obstruction, instead of stopping in their tracks, the team takes a split-second decision. Their actions will speak volumes of their resolve towards successful completion of the task entrusted to them, their nerves of steel in a high-pressure situation, and the quality training they undergo. Now, the multi-gypsy in front of you will be dismantled up to chassis level,
and assembled back to running condition in a cohesive and a sequential manner. The vehicle weighs 1.2 tons. The half-ton engine block, which is otherwise lifted using a pulley and chain system in a workshop, is lifted manually by our fit soldiers, carried over rough terrain and put in place without affecting serviceability. If the boulder cannot be moved, the vehicle will. Watch closely as the team, unmoved by hindrance blocking their path, proceeds to take apart their transport, carry it literally piece by piece, assemble it and continue towards their objective. The drill shall also display the quick and crisp movement of the trainees and their ability to perform accurately within the constraint of time. The speciality of this drill is that the entire activity is performed by a group of young air warriors who have just passed out of their training from the Mechanical Transport Training Institute, Avadi. The participants of this drill are LAC Rohit Kumar, LAC Ankush Singh, ACs Vishal Singh, Navdeep Singh, Sahil Nehra, Anmol Tyagi, Pankaj Barwar, Ranjan Sharma, Yogesh, AS Rathod, SK Sharma, and AC Bunty Singh. Even though the entire activity is showcased in front of hundreds of watchful eyes, the trainees are continuing with their tasks unhindered. They have been trained under the expert guidance of Wing Commander R. Pradeep and team of instructors JW Chirag Bhatia, JW Suman Kumar, JW A. Singh and Corporal K. Naveen. An enhancement in confidence and professional acumen has been observed in these trainees after every successful completion of this drill. This entire exercise aims not to display the modus operandi of our soldiers, but their sheer resolve when they set out about their mission. The team has now successfully completed assembling the vehicle, and as you can observe, it is back to running condition. मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्रिल टीम अब अपने कार्य को निपुणता के साथ संपन्न करके वापस चल चुकी है। जिस प्रकार इन्होंने इस 1.2 टन के वाहन को मात्र 5 मिनट में खोलकर पुनः सम्मिलित किया और चलने योग्य बनाया, वह न केवल ड्रिल के रूप में सराहनीय है, बल्कि युद्ध के दौरान भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। Please give a big round of applause to these young and energetic air warriors. यहाँ पर एयरफोर्स के जो जवान हैं, वायु सैनिक हैं, लगातार करतब दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए एयरफोर्स के जो तमाम परिवार है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और यहाँ पर PR चौधरी एयर चीफ मार्शल खास तौर पर मेहमान हैं। In a few moments from now, you will witness the display of precision rifle drill by the Air Warrior Drill Team of the Indian Air Force, Arjun. मनाया जा रहा है, एक नई परंपरा हो रही है। NCR दिल्ली के अलावा पहली बार चंडीगढ़ में स्थापना दिवस मनाया गया है और उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में इस एयर शो या फिर स्थापना दिवस को मनाया जाएगा और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो परेड का कार्यक्रम है। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो सुखना झील पर होगा और सुखना कहानी दिखाई जाएगी किस तरीके से हवा में वायु सैनिक
देश की रक्षा करते हैं, इस तरीके से देश की आन बान शान शान को जो है Arjun, the Air Warrior drill team, was formed in the year 2004, and during 18 years of its glorious existence, it has won accolades in various national and international performances, making it the first drill team of the Indian Defence Forces. कहानी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है। The name Arjun is a tribute to the late Marshal of the Indian Air Force, Arjun Singh, Padma Vibhushan, Distinguished Flying Cross, who lived his whole life as a true soldier and is an inspiration to generations of service personnel. Under the able guidance of its officer in charge, Wing Commander Kunal Khanna, Team Administrator, Squadron Leader Akash Gangas, and competent instructors JWRB Upadhyay and Sergeant Rajdeep Singh, the team aspires to achieve the incredible. Today, the drill team will perform unconventional and breathtaking rifle maneuvers. The motto of the team is simple: drill to thrill. देखिए सबसे पहले जो आप अब टीम लीडर हमारे मुख्य अतिथि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से प्रदर्शन को शुरू करने की आज्ञा लेने जा रहे हैं। वो यहाँ पर उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर कैमरे को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो चारों तरफ जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है एयरपोर्ट के यहाँ पर मौजूद है। और ये जो कार्यक्रम बता रहा था चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर आयोजित है और यहाँ पर जो प्रदर्शनी की गई है वो भारत में निर्मित स्वदेशी विमान और हेलीकॉप्टर की है। और अब टीम आपको रोमांचित करने के लिए तैयार है। टीम आज रोमांचक राइफल करतबों को 9 विभिन्न तरीकों में दिखाएगी। इस टीम की पहली फॉर्मेशन है स्क्वायर फॉर्मेशन। अब टीम यहां से आगे बढ़कर अपनी दक्षता को आपके नजदीक आकर प्रदर्शित करेगी। हेलीकॉप्टर हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदर्शन ही नहीं वहाँ पर तरह तरह के करतब दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से आपात परिस्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो या फिर हवा में किसी तरह का कोई भी जोखिम हो, किस तरीके टीम अब W फॉर्मेशन में रोमांचक करतबों को प्रदर्शित करेगी। का प्रदर्शन करती है वो वहाँ पर दिखाया जाएगा। तैयारियों की अगर बात करूँ तो पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी असीम अभ्यास एवं परिश्रम करने के पश्चात यह टीम जटिल गतिविधियों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित कर रही है। और उसके लिए बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुद जो है बसों के अंदर बैठाकर तमाम दर्शकों को सुखना झील तक ले जाया जाएगा और जितना भी सुखना झील के आसपास का इलाका है उसे नो फ्लाई जोन बनाया गया है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको स्टैंड बाई पर अलर्ट मोड पर 9 फाइटर जेट को तैयार रखा गया है। और ये तस्वीरें एयरपोर्ट स्टेशन चंडीगढ़ की है। आप देखिए वायु सैनिक करतब दिखा रहे हैं हथियारों के साथ। टीम अब W फॉर्मेशन से कूच करेगी। वो तस्वीरें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा करतब नहीं दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और अब देखिए अब तक का एक नया कारनामा जिसमें वायुयोद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने साथ चल रहे साथी की ओर फेंक रहे हैं। राजनाथ सिंह 1:45 पर चंडीगढ़ के इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि इस बीच LAC तरुण देसवाल आगे बढ़कर उच्च स्तरीय एकल प्रदर्शन करेंगे जो कि फुर्ती, लचीलापन और अदम्य साहस का संयोजन है। बताना चाह रहा था कि दिलचस्प तस्वीरें हम लगातार बात कर रहे थे कि भारतीय वायुसेना को आज नई कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म मिलेगी। तो ये जो यूनिफॉर्म मैं दिखाने जा रहा हूँ ये पहली तस्वीरें हैं ये कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म की। हालांकि इनका अवलोकन अभी किया जाना है। अगली फॉर्मेशन है रोम्बस फॉर्मेशन। यहाँ हमें इन वायुयोद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलो है वह इनके हाथ में खिलौनों के समान प्रतीत होता है। अब समय है कि आपको एक और हैरत अंगेज करतब पेश किया जाए जिसमें वायुयोद्धा बिना देखे हुए पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनके मध्य 12 फीट की दूरी भी है।
अगली फॉर्मेशन है इंक्लाइन लाइन फॉर्मेशन। इसमें वायु योद्धा एक ही कतार में चलते हुए राइफल की अदला बदली करेंगे। यह प्रदर्शन अनुशासन और प्रशिक्षण के साथ साथ तीव्रता का प्रतीक है। ड्रिल वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुशासन वायुसेना की जीवन शैली है। अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से न हटाएं। अब आप देखेंगे कितने अनोखे अंदाज से ये एक दूसरे को राइफल पास करेंगे। टीम अब 4 लाइन फॉर्मेशन का निर्माण करेगी। यहां यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि ड्रिल न केवल व्यक्ति में धीरज के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि उनमें मुकाबला करने की क्षमता एवं प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। एक बार फिर से टीम आपको हैरत अंगेज करतबों से अचंभित करते हुए बिन देखे ही अपने पीछे खड़े साथी को एक बार फिर से राइफल फेंकेगी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब टीम जिग-जैग फॉर्मेशन में कूच करते हुए संयोजित राइफल करतब करेगी। और एक बार फिर से हमारे बीच आ गए हैं एलएसी तरुण, जो कि अपनी उत्कृष्ट श्रेणी की राइफल ड्रिल का प्रदर्शन करेंगे। अब टीम अर्धवृत्ताकार फॉर्मेशन में प्रदर्शन करेगी ताकि आप निकट से इस प्रदर्शन का अनुभव ले सकें। यह टीम सारी गतिविधियों को जीरो एरर टॉलरेंस के अंतर्गत प्रदर्शन कर रही है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। जब तक आप ड्रिल को देख रहे हैं, मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराता हूं। आज के टीम लीडर हैं एलएसी विक्रम। पहली पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी धनाराम, संतोष, अमन, अंकित, रंजय, पंकज, एनके झा, साहिल और कौपल चिन्नतंबी। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं आदर्श, अमन, विशाल, सुमंत, नितेश, प्रियांक, साहिल गोसाई, मुकुंद और एलएसी एचपी सिंह। टीम की अगली फॉर्मेशन है क्राउन फॉर्मेशन। ड्रिल के संगीत को संयोजित किया है विंग कमांडर जयचंद्रन, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड ने। देवियों और सज्जनों, टीम अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन फॉर्मेशन बना रही है, जो कि है टनल फॉर्मेशन।
वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नए नए रीति रिवाज और परंपराएं बन रही हैं। टीम लीडर अपने साथियों की ड्रिल क्षमता और योग्यता की परीक्षा लेंगे, जो कि आज का सबसे रोमांचक कर्तव्य है। और जिन्होंने एक बार पिछला मौका छोड़ दिया, उनके लिए अब एक बार और मौका। यह कठिन परिश्रम, बेहतरीन मानसिक शारीरिक तालमेल और अपनी एवं अपने साथियों की योग्यता पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस ड्रिल टीम ने .303 राइफल का प्रयोग किया। इस पूरी ड्रिल टीम को प्रशिक्षित करने में कुल 6 महीनों का समय लगता है। इसके अलावा इनके पीछे तस्वीरें अपने आप बोलती हैं। भारत में निर्मित स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड तेजस यहाँ पर मौजूद है। भारतीय वायुसेना एक नई परंपरा के साथ, नए जोश और जश्न के साथ 90वां स्थापना दिवस मना रही है। कैमरामैन कुलजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। Please put your hands together once again for a breathtaking performance by these young air warriors. भारतीय वायुसेना के जवानों को मिल रही है और ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वायुसेना के सैनिकों को मिल रही है। इसके अलावा पीछे की तस्वीरें अहम खास हैं, जिसमें स्वदेशी निर्मित। अब आपके सामने भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा अपनी नई युद्धक वर्दी को पहली बार देश के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस मौके पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की राजधानी के अलावा Now, Wing Commander Kunal Khanna and the team are presenting the new combat uniform of the Indian Air Force. अब आप देख सकते हैं हमारे वायु योद्धा जो आपके समक्ष कदम ताल करते हुए आ रहे हैं। The Air Warriors are adorning the combat T-shirt which signifies the working dress of the Indian Air Force. भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट टी शर्ट को पहली बार शामिल किया गया है। यह नई वर्दी एयरफोर्स स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी के कई प्रयास और अनुसंधान का परिणाम है। वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एवं बदलते युद्धक वातावरण और तौर तरीकों में इस युद्धक वर्दी का विशेष रूप से प्रयोग एक आवश्यक कदम है। इस वर्दी को धारण करके युद्ध के मैदान में न केवल दुश्मन को चकमा देते हुए लगातार आगे बढ़ा जा सकता है, बल्कि रेगिस्तानी तथा पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों में भी यह वर्दी एक पारंपरिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। बदलती सैन्य कार्यवाहियों में किसी भी अभियान को 100% सफल बनाने में यह एक अति आवश्यक अंग है। इस वर्दी की विशेषता है इसकी कॉम्बैट टी शर्ट, फील्ड स्केल डिसरप्टिव कैप, कॉम्बैट बोनी हैट, डिसरप्टिव वेब बेल्ट, एंकलेट कॉम्बैट बूट्स और मैचिंग टर्बन।
The new uniform is unique. It has an exclusive, contemporary and functional design made in order to make the soldier better camouflaged in nature. The fabric is lighter and sturdier, making it comfortable to be worn for longer durations. This new uniform's versatility also means that it can be worn in different terrains, from the mountainous terrain of Kashmir to the vast coastline of the peninsula, and from the thick jungles of the northeast to the deserts of Rajasthan. The air warriors standing smartly in front of you are in full disruptive gear, showcasing the new combat uniform. तालियों से भारतीय वायुसेना की इस नए वर्दी का तथा इनमें सुसज्जित इन वायु योद्धाओं की सराहना करें। On behalf of Air Marshal Shri Kumar Prabhakaran, Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command, we express our sincere gratitude to all our distinguished guests for honoring us with your presence this morning. As we conclude this morning's events, we, the Air Warriors, pledge to the nation to touch the sky with glory always and every time. आज के कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। आज के शुभ अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों का पश्चिमी वायु कमान के वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन एवं सभी कार्मिकों की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। All distinguished guests are requested